Okay. Now we are going to start a new topic, that is the analysis and design of advanced control system. So first of all, why we need this analysis and the advanced control system, right? So as you know that in the most of the control system use the feedback control system, and generally in the process controls, generally in the chemical process industries, we are using the feedback control. Okay, so it is not only one of one controller that only we used inside the industry. Okay, so I will take the 10 as the last, right? So what is the disadvantage? Why we are going towards the analysis or the using the advanced control system? Why we are proposing the advanced control system? So there is an the certain limitation of the feedback control system. So what is that limitation? That limitation is nothing but the you can see here. The disadvantage of the conventional feedback control system is that the corrective action for disturbance does not begin until after the control variable deviates from the set point. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि आपका सेट पॉइंट कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम उस समय तक काम नहीं करेगा जब तक कि वो आपका डेविएशन जब तक नहीं आता. डेविएशन किसमें? सेट पॉइंट माइनस the error, set point minus whatever the feedback, okay, that is the ym measured value, the error. जब तक ये डेविएशन नहीं आएगा तब तक आपका क्या होगा? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विल नॉट वर्क. Okay, so it is the advantage of this conventional feedback control system is that the corrective action for disturbance does not begin until after the control variables deviate from the set point, right? So it means there exists situation where the feedback control action is insufficient to produce the desired response of a given process. इसका क्या मतलब हुआ? It means the using the feedback control system, single feedback control system is insufficient. Okay, so we are going to propose the different types of the control system based on some advancement in the feedback control. That is, first one is the feed forward control, second one is the cascade control, third is the ratio control. Okay, next is the override control, split range, multivariable, adaptive and differential control. Right, one more control system is also there that is not mentioned here, that is the compensatory control. That is the compensatory control. You can say, what is the compensatory control? Compensatory control is generally used for the large date time, okay, or you can say inverse response. So anyone can tell me the why the date time will come in the picture? Why will date time will come in the picture? Please, anyone? सर जब तक एरर नहीं मिलेगा कंट्रोलर को तब तक वो वर्क date time. I am asking about date time. Why the date time will come in the picture in the control system? I have already told you. सर First, सर yes, पाइप के कारण आता है सर. हमारा जो लेवल का टैंक है, what that effect is known as, that is the transportation lag, right? First effect, first cause due to the date time will come in the picture is the transportation lag. Second is the due to the measurement delay, measurement delay you can say, है ना, measurement delay. ठीक है, ये दो मेन वजह है जिसके चलते आपका क्या आता है? डेट टाइम इन कम इन द पिक्चर. ठीक है, ओके. सो एंड नेक्स्ट इज द, you can say, the cascade control and the split range control. These are, you can say, the multiple loop control है ये. These are the multiple loop control, right? Except this ratio control. Cascade control, override control, and split control is the kind of the multiple loop control, right? So now
come to the next. So the compensatory control or it is used for the large date time or the inverse response. So compensatory control for removing the large date time, you can say for the removing the large date time, we are using, it means we are using e to the power minus tau ds, as you know, right? And for this purpose, you know, the Smith predictor is used, right? Smith predictor is used. Okay. So Smith predictor is used, right? Okay. So next you can understand like this one. So feedback control configuration involves one measurement output and one manipulated variable in a single loop. Means you can see here, there's a one picture, I think, yes. So in the feedback control system, there is a one output. We are going to control T naught. Okay, we are going to control T naught. Let's say there is a system. Okay, and our aim is to control this only one output, that is the T naught. Using what? Using this set point and whatever. Okay. So we will understand with the help of example. So one measurement, that is the output, and one manipulated variable in a single loop. Okay. So feedback control system work on this principle. Okay, one manipulated variable. Let's say हमको हीटर को आपको क्या कर लेवल कंट्रोल करना है. Let's say we have to control the level of this tank, right? Then what we have to do? तो H आपको कंट्रोल करना है. So we will control just this flow, that is F naught, or this F in. Okay, and due to this we can control the the system, the level. So manipulated variable is flow in or flow out, and the control variable or the one measurement output is the H. So this is a simple feedback control system, as we have seen in the previous example, the first example in the starting of the class. So, however, beside this picture, beside this scenario, right, the feedback control action, simple feedback control, one measurement and one manipulated variable, we have different situation. We can have the different situation. Like first situation maybe arise more than one measurement and one manipulation. We have to control only H, but we have the different types of measurement. We will see with the example. Okay, one measurement and more than one manipulated variable. We have to control several manipulated variables, but with the help of only one measurement. Right. So the example is simple override. For this, we are using the control system override for this such type of system. We will see. Okay. So our first focus is to see the picture here. More than one measurement and one manipulation. एक manipulation होगा और एक से ज्यादा measurement होगा, तो हम लोग उसको कैसे handle करेंगे? ठीक है? तो in such cases, control system with multiple loops may arise. So इसका क्या मतलब? What it means? It means we have arises. We are going to deal with the different types of loops. That's the multiple loops. Okay. So इस multiple loops को करने के लिए हम लोग we have the different types of control system. So that control system is the cascade control, various type of selective control. Yes. Okay. So these are the typical example we are just going to read. Okay. So first our focus is to cascade control system. We are going to handle with the cascade control system. Okay. So you can see this, jacketed heater. This is the temperature control, you can say. This is the temperature control of jacketed, jacketed CSTR. Okay. So this is so we are going to handle with this picture. Okay. So what this picture will say is, first we will arise some problem, then we will try to address that problem, and then in last we are going to address with some advanced control system, that's the cascade control system. That's our target. So
समझना अच्छे से, अगर कोई समझ दिक्कत है तो बताना। दिस इज टेकन फ्रॉम द स्टेफनोपॉलस, दैट इज द केमिकल प्रोसेस कंट्रोल। केमिकल प्रोसेस में साथ साथ ये बताते जा रहा हूँ कि कहां से लिया है रेफरेंस मैंने। दिस इज द रेफरेंस बुक, केमिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। इस द बुक, द ऑथर ऑफ द दिस बुक इज स्टेफनोपॉलस, एज यू नो, ठीक है, स्टेफनोपॉलस। So consider the CSTR. This picture is, let's say, figure number 1.7 in the first chapter. So this is the CSTR, simple. So what is the meaning of CSTR? Anyone? Continuous stir tank reactor, right? Continuous stir tank reactor. So this is the example of, you know, exothermic type of reaction. Exothermic reaction. So this is nothing but the heat generator, you can say, heat generator. Let's say we are going to mix two chemicals, and due to the mixing of that chemicals, let's say that some heat is going to generate. Okay, some heat is going to generate. So our target is to maintain the temperature inside the tank. Okay, so our target is to control this temperature T. Okay, so how that this temperature is going to control? The control, simple, I'm repeating once again, the control objective is to keep the temperature of the reacting mixture at the temperature T. Simple. So how this temperature is going to control? Our one manipulation variable is there, that is the output. Okay, and now you can control this temperature with the help of this, you can say, by increasing this flow Fi or this F, or you can also use you can also control this temperature with the help of this coolant flow, by controlling this coolant flow. Okay, if you are going to control the flow of this, you can say, flow of this coolant, then you are able to control ultimate temperature inside the tank. Is it clear? Yes or no? Yes or no? There are two possibilities to control this one. One possibility is simple feedback control system. You can see here, simple feedback control system. With the help of this, we can control this one. Okay, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अल्टीमेटली हमको करना किससे? हमको करना कूलेंट से। हम लोग सपोज लेट लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इसका मेजर किया, जस्ट वी हैव मेजर, सिंपल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, सिंपल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या करेंगे इसको? जस्ट वी मेजर द टेम्परेचर with the help of temperature transmitter और temperature sensor। temperature sensor, temperature transmitter इसमें इनबिल्ट है, इसमें मेजर किया, मेजर करके टेम्परेचर कंट्रोलर को दिया, सेट पॉइंट आ रहा है। एज यू नो दैट व्हाट इज द टेम्परेचर कंट्रोलर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पीआईडी कंट्रोलर एंड ऑल अदर कंट्रोलर्स। ये कंट्रोलर है, किस तरीके से काम करता है बता दिया है। सेट पॉइंट यहां से आया जिस पे टेम्परेचर पे काम करना है, यहां से आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर आया, सम एरर है जनरेटेड, दैट एरर इज सेंड टू द सम एक्चुएटर, दैट इज द कंट्रोल वाल्व। एज यू नो, कंट्रोल वाल्व के पास गया, यहां से क्या है? कूलेंट जा रहा है, किसके अंदर? इस जैकेट के अंदर, मींस इस जैकेट के अंदर, दिस इज द जैकेट। और इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द टेम्परेचर इनसाइड दिस जैकेट, देन इट मींस यू आर कंट्रोल द अल्टीमेट टेम्परेचर। क्योंकि इसके चारों, बीकर के चारों तरफ या रिएक्टर के चारों तरफ क्या लगा हुआ है? आपका एक जैकेट। उस जैकेट को अगर इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल, दैट मींस यू हैव अल्टीमेटली कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ दिस टैंक, राइट। तो ये आपका कूलेंट, आप इसको कंट्रोल कर लिए, और इसका अंदर जो फ्लो करेगा टेम्परेचर, वो अल्टीमेटली इस टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा। सिंपल। Any doubt? Any doubt? Yes or no? No, sir. Huh? Is it clear? अरे say yes or no? Yes, sir. Clear, sir. कोई फायदा नहीं। Okay. Next scenario, next possibility is, what is the next possibility? The next possibility is the cascade control system. With the help of the cascade control system,
with the help of the cascade control system we can see the next picture. See यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे केस में, ये फीड आ रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल करना नहीं है क्योंकि some chemical is coming और A to B some exothermic reaction is going and some heat is going to generated. हमने उस हीट को जनरेट किया और उसको हमने टेम्परेचर सेंसर से, टेम्परेचर ट्रांसमीटर से हमने मेजर करके ट्रांसमिट कर दिया टेम्परेचर कंट्रोलर के पास. दिस इज द सेट पॉइंट, सम एरर इज जनरेटेड, ओके, नो प्रॉब्लम. बट इसमें सिंपल अब क्या करना है, हमें और एक्यूरेट करने के लिए, फास्ट बनाने के लिए करना क्या है, मोर एक्यूरेट कंट्रोलर कैसे यूज किया जाए, उसको और कैसे एक्यूरेट बनाया जाए. हमने क्या किया कि यहाँ पर whatever temperature of this coolant is also measured. We are not going to measure this temperature, coolant temperature, in first scenario, in the feedback control system. But in this picture, in the second case, in the second possibility, we have measured the temperature of this coolant and this temperature is sent to the next controller, one more controller. Whatever the set point, whatever the error is generated to the first main set point minus this value, okay, this error is sent to the next temperature controller, that is with the help of this value. So this minus this will going to control the coolant. So which case now you think which more provide the more accurate result, or which more going to control the system or the temperature of this tank? This possibility is known as the cascade control. However, this is the simple feedback control. Now, what is your opinion? Is it clear or not? First of all, tell me. Yes, sir. अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना तो बताओ. यस और नो? सर इसमें जो हम लोग आउटपुट दे रहे हैं सर, वो तो बस हम कूलेंट को ही चेंज कर रहे हैं ना सर? कूलेंट के फ्लो को चेंज कर रहे हैं. यस, दोनों में कूलेंट के फ्लो को चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी. हाँ, तो मतलब इसमें अभी सिंगल आउटपुट ही है ना, मतलब जैसे फीड में जो हम दे रहे हैं वो तो चेंज नहीं कर रहे हैं अभी. आउटपुट इज गोइंग टू कंट्रोल द टेम्परेचर, बट द मेजरमेंट वैल्यू you can see here what we have said earlier, more than one measurement is here. More than one measurement is here. Two measurement हुआ ना यहाँ पे. कौन कौन सा measurement हुआ? एक टेम्परेचर T और दूसरा TC. So two measurement is here and one output. Output क्या है आपका? इसको टेम्परेचर कंट्रोल करना. तो with the help of this temperature we are going to control, है ना? उसको हमने क्या किया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर सेंसर से लेकर कंट्रोल कर रहे हैं. Yes, is it clear? Yes, sir. Okay, so what is your opinion? Which one is more accurate and which one more faster? सर कास्केड वाला होगा सर. कैस्केड कंट्रोल. इसमें क्या कर रहे हैं आप, जो एरर आ रहा है उस एरर को फिर से आप इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर में दे रहे हैं जिससे आपका और फास्ट हो जाए. लेकिन फास्ट कैसे होगा इसके लिए भी एक सिस्टम है. ओके, तो नाउ you can see this is the cascade control. We can improve the response of the simple feedback control to change in the coolant temperature by TC and taking control action before its effect has been felt by the reactor mixer, right? So thus if TC goes up, TC जैसे ऊपर जाएगा coolant temperature, increase the flow rate, okay, of the coolant to remove the same amount of heat. जैसे ऊपर जाएगा आपने क्या किया, आपने coolant को इससे पहले आपने इसको कंट्रोल कर लिया टीसी को. ओके, सो अल्टीमेटली योर सिस्टम इज गोइंग टू फास्ट. सो इसका मतलब जो ये स्लेव, इसमें दो तरह का केस है. एक है मास्टर जिसको अल्टीमेट आप कंट्रोल करने वाले हैं, और एक आपका स्लेव जो इसको कंट्रोल करने वाले हैं. दो तरह का लूप बन रहा है. देयर आर टू लूप, मल्टीपल लूप्स. फर्स्ट लूप इज द स्लेव, अल्टीमेटली इज द टारगेट इज अ मास्टर, दैट इज गोइंग टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द टैंक ऑफ द रिएक्टर, राइट? So increase the flow rate of the coolant to remove the same amount of heat, or decrease the coolant flow rate when the TC decreases, right? Any doubt? No. So we notice that therefore we can have two control loops. We have two control loops. It's the most important line. Two control loops, this one and this one, using two different measurement, T and TC. T और TC से आपका दो लूप बन रहा है, but sharing a common manipulative variable FC. Ultimately आपको क्या करना है, FC आपको इसको कंट्रोल करना है. एफसी के थ्रू आप कंट्रोल करने वाले हैं, एफसी के थ्रू कंट्रोल करने वाले, राइट?
So it means the loop that measures t is the dominant, or you can say primary, or you can say master. This is the master or the primary or the dominant control loop. First one, this one, used as a set point supplied by the operator. Ultimate हमारा तो यही टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, इसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है. Whatever the user will provide the set point here, that is the main. Okay. Secondary or the slave loop is the loop that measures the TC वाला, ये वाला, TC वाला, uses the output of the primary controller as its set point and is called the secondary or the slave loop. This is the slave loop, right? ठीक है. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. So this is taken from the Kafner book. So the reference of this book is the Process Systems Analysis and Control. The writer is, you guys know, Kafner. ठीक है. So in this picture you can see that this one is the cattle. Same type of picture is there. This is just the previous example, the CSTR, and this is the cattle. For this cattle, the system consists of the cattle through which water entering at temperature Ti, water is entering at the temperature Ti, and is heated to the T0 temperature, by the flow of hot oil through a jacketed surrounding the cattle. ठीक है. इसके अंदर हमारा क्या है, ये आपका क्या होगा, जैकेट है, जिसमें क्या है, hot oil is there. I'm repeating once again. This system consists of a cattle. Through which water is entering at the temperature Ti and is heated to the T0. Okay, and heat कैसे हो रहा है, with the help of the hot oil that is provided in the jacket. Okay, so the temperature of the water in the cattle is measured. The temperature of the water in the cattle is measured and transmitted to the controller, right? And transmitted to the controller, and then again the flow going to control the flow, and again we are supplying the hot oil. So see, this is a simple feedback control system. Are you agree or not? Are you agree? This is a simple feedback control system. Yes, sir. Right. But in this case, what we are going to tell, what we are going to do, हमने क्या किया, हमने एक तो मेजर इसको कर लिया. मेजर करने के बाद एक दूसरा टेम्परेचर कंट्रोलर विथ टेम्परेचर ट्रांसमीटर. ओके, इसका सेट पॉइंट किसको भेजा, दूसरे टेम्परेचर कंट्रोलर विद टेम्परेचर ट्रांसमीटर. ये किसका टेम्परेचर मेजर होने वाला है, ये हो रहा है आपका जैकेट का, दैट इज द ऑयल, हॉट ऑयल. और इसका हमने टेम्परेचर मेजर किया, किसको भेजा, इसके थ्रू हमने किसको, जैकेट को भेज दिया, जिससे आपका क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कंट्रोल हो रहा है, राइट. तो शुगा Okay. I have to go basically for the RT-PCR test, but don't worry, I will cover this topic today. Okay. So you can see here with these two examples, now we are able to understand what we are doing. The first picture is simple, that is the feedback control system, or the single loop conventional control. That is the feedback control, nothing else. That is the feedback control. And second picture will arises, that is the cascade control, right? In the cascade control, you can see there are two loops. In the first picture, simple, this is the cattle, this is the jacket. Ultimate target is to control the temperature of the cattle. How we are going to control the temperature of the cattle? With the help of
विद द हेल्प ऑफ, सर मैं क्लास में, अभी 2 मिनट में खाता हूँ सर, मैं क्लास में हूँ, अभी आता हूँ आपके पास, है ना। तो what we are going to control this, the temperature of the kettle with the help of the whatever the hot oil or the coolant that is inside the jacket. Okay, so this is the control valve, this is the controller. Okay, so all your picture you understand. ठीक है, अब इसमें क्या है, आप जैकेट वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है, दैट इज योर आयल. विद द हेल्प ऑफ आयल यू आर गोइंग टू कंट्रोल, राइट, वी आर गोइंग टू कंट्रोल ultimate the kettle with the help of this flow, or you can say the oil temperature. Okay, set point, ultimate set point is this one. ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पिक्चर, दैट इज द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, राइट. अब सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, सेकंड सिनेरियो में हो गया सेम पिक्चर वही है. यहां से क्या किया आपने, पहले जैकेट के टेम्परेचर को आपने मेजर कर लिया और उसको आपने एक कंट्रोलर से, पहले 2 हमने कंट्रोल लगाया, GC1 and GC2. GC1 is for the cattle control, temperature of the cattle control, you can say, and GC2 is for the controlling of the temperature of the for the jacket, right. अल्टीमेटली किससे कंट्रोल करेंगे तो हम आपका वाल्व से, एक ही वाल्व है आपका, you can see here, this is the valve GV, this is GC2, this is GC1, nothing else. Okay, this is the cattle और दिस इज द क्या हो गया, ये आपका जैकेट. ठीक है, तो वी हैव मेजर्ड दिस टेम्परेचर ऑफ द जैकेट एंड सेंड टू सम कंट्रोलर, और अल्टीमेटली यहां से क्या हुआ, यहां से आप किसका कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द ओवरऑल कैटल, यहां से आपने भेज दिया इसको. ठीक है, कंट्रोलर इसको भेजा सिग्नल. ठीक है, तो यही आपका पिक्चर हो गया किसका, कैस्केट का, जो हमने यहां रिप्रेजेंट किया सेम वही. ठीक है, तो पिक्चर कितने तरह का हो गया, पिक्चर हमारा सिंपल आपका हो गया कि प्रोसेस, देयर आर 2 प्रोसेस P1 and P2. ओवरऑल प्रोसेस हमारा P1 प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, सो वी हैव ओनली टेकन हियर D1 एंड मे बी द डिस्टर्बेंस हो सकता है आपका 2 हो सकता है. ठीक है, ओवरऑल हम कह रहे हैं. ठीक है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज 1, मोर देन 1 मेजरमेंट इज देयर. तो प्रोसेस 1 को हमने इसे ऐसे ले लिया मेजर, और अगर हम इसको कहें तो आपका सेकेंडरी लूप को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज यू कैन से द स्लेव और द मास्टर इज दिस वन, प्राइमरी लूप इज दिस वन. ओके, सो दिस इज द combination of, you can say, open loop, you can say the cascade, 2 loops, this is consisting of the 2 loops. First is the, you can say, internal, and second one is external. The internal is known as the secondary loop or the slave loop. Okay, and first one is the primary, is the, you can say, primary or the main control loop. Okay, so now you can see these are the different types of the situation. There are the different types of some examples, these are given in the book or in the Stephanopoulos book, you can say, simple. So first example is the heat exchanger. This is a picture number 1. This is the heat exchanger. Second one, the distillation column. This is the distillation column. And third one is the, you know, furnace. This is the furnace. Okay, and this one is the also the, you can say, this is also the, sorry, this is the distillation column, and this is the furnace. Okay, so you can see here the heat exchanger. In the case of the heat exchanger, our control objective, our ultimate control objective is to keep the exit temperature, whatever this is the exit temperature, let's say this is a T, exit temperature of the stream, at some desired value. ठीक है, at some desired value. So ultimately किससे कर रहे हैं हम लोग, ये जैकेट का टेम्परेचर हो गया. ठीक है, अल्टीमेटली अगेन इट इज अ हीट एक्सचेंजर. तो जैकेट का टेम्परेचर अल्टीमेटली इट इज लाइक अ CSTR. ठीक है, जैकेट का टेम्परेचर है, जस्ट वी मेजर द जैकेट टेम्परेचर. ठीक है, समझ में आ रहा है. और इससे हमने क्या किया, स्टीम 1 से इसको वाल्व के थ्रू कंट्रोल कर लिया. तो इससे भी हमने मेजर कर लिया यहाँ का टेम्परेचर. ठीक है, तो ये सेकेंडरी लूप हो गया, दिस द प्राइमरी लूप. तो हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं.
So these are some examples just to try to read or use it from the book, that is the Stephanopoulos. Okay, the description is given in the book. So now we are going to analyze the mathematical some expression for the control system, the cascade control, right? So analysis of the cascade control in the form of some mathematical equation, that is the what is the transfer function for such system, and how we are going to control which one should be the faster, this one is or this one, which type of controller, which type of control action should be used inside the GC2 or the GC1, since क्या इसमें PID कंट्रोल इसमें PI कर सकते हैं, क्या इसमें PI इसमें PD PID कर सकते हैं. So we will discuss the different types of the cases based on the mathematical analysis or the transfer function of the system, right? So in the next lecture we will try to address this issue, right? तो जल्दी से हम लोग अटेंडेंस लेते हैं.